Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Bashir Ahmad Malik, teacher, Government High School, Naugam. Today I am going to teach a short story, Colors of Rainbow, to the students of class 8th. My dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा। रेनबो धनक को बोलते हैं, यानी जो बारिश के बाद कभी कभी आसमान पर वो मुख्तलिफ कलर्स की वो दायरे की शक्ल में वो मुख्तलिफ कलरों का वो आसमान पर चढ़ता है, उसको हम धनक बोलते हैं। उसी को रेनबो बोलते हैं, कलर्स। उसमें 7 कलर्स होते हैं, कलर्स ऑफ रेनबो। मुझे रेनबो आपको नहीं पढ़ाना है, बल्कि ये एक शॉर्ट स्टोरी है। कलर्स ऑफ रेनबो इज़ ए डोगरी शॉर्ट स्टोरी। ये एक डोगरी कहानी है, डोगरी कहानी है। इट इज़ अबाउट द कपल हु एंगेजेस इन स्मॉल quarrels एंड आर्ग्यूमेंट्स। दिस स्टोरी इज़ बेसिकली अबाउट ए कपल। ये एक बीवी और उसके शौहर के मुतल्लिक हैं, जो हमेशा दे वर ऑलवेज एंगेजिंग themselves इन स्मॉल quarrels एंड आर्ग्यूमेंट्स। यानी वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे और एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते थे। लेटर ऑन फाइनली थिंग्स settle at a loveful and joyful note. Later on, they reconcile with each other. उनका आपस में सलाह हो जाता है और वो फाइनली सेटल हो जाते हैं। चलिए हम पहले इसका कुछ पढ़ते हैं। पहला जो इसका ये पैरा है, The rain had just stopped. The story begins after when there was a raining outside and the rain has now stopped. बारिश गिर रही थी और अब वो बारिश थम गई है। I was looking out of the window. The writer says that he was looking through the window. He was looking outside through the window. वो बाहर की तरफ देख रहा था। Occasionally a drop of water fall from the wing of the window. Occasionally तो वहाँ से बारिश का एक कतरा सीलिंग से, एवनिंग, एवनिंग मीन्स सीलिंग ऑफ विंडो, यानी जो कवर होता है विंडो का, खिड़की के ऊपर में जो हम सीलिंग होते हैं, जो कवर होता है, वहाँ से एक बारिश का कतरा गिर जाता है। फॉल फ्रॉम द एविंग ऑफ द विंडो। द क्लाउड्स हैड क्लियर्ड, नाउ द स्काई इज क्लियर, क्लाउड्स हैव क्लियर्ड and the sun had also come out. Now the sun has also come out. अब सूरज भी निकल चुका है। When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. And when the sun shines after the rainfall, when there is raining and later the sun came out, it looks very pleasant. It looks very charming. ये बहुत ही फिर इसमें खुशगवार मौसम बनता है जब बारिश के बाद सूरज निकलता है। I was watching the beauties of nature. The writer says that he was watching the beauties of nature. He was watching the situation. He was watching the pleasant scene. And just after the rainfall, the sun came out. This was a pleasant scene, and the writer was watching this, lost in thought. He was thinking something about the nature. Just outside the window were some chilli plants. So to the near of his window there was some chilli plants. वहाँ पर कुछ चिल्ली पौधे थे, वो उनकी तरफ देख रहा था। They had grown quite tall and these chilli plants had grown. ये grew से निकला है, grow से निकला है, बढ़ना, grow, grew, grown. वो बहुत लंबे हो चुके थे वो प्लांट्स।
एंड वेर सपोर्टिंग रेड चिलीज, और उनको वहाँ पर वो रेड चिलीज निकली थी, ये लाल वो चिलीज वहाँ पर उन पौधों पे निकली थी. ड्रॉप्स ऑफ वाटर वायर dripping sliding down the plants, and the drops of plants were falling from the plants. They were dripping, they were coming out, uh, sliding down, and they were falling down. Sliding down means falling down from the plants. वो पौधों से वो बारिश के वो कतरे धीरे धीरे गिर रहे थे. All my attention was centered on the raindrops. Now the writer says that his attention was towards these raindrops. How these raindrops are falling. The writer was looking towards these raindrops. वो किस तरह गिर रहे हैं, पूरी तवज्जो के साथ वो उन बारिश के कतरों को देख रहा था. A light breeze was blowing outside. The writer says that a gentle wind, थोड़ी धीमी धीमी हवाएं बाहर चल रही थी. Light breeze means gentle wind. Gentle wind was blowing outside. I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. The writer says that he was sitting on the cot and he wrapped himself with the bed sheet. यानी बेड शीट उसने अपने ऊपर ओढ़ा और वो चटाई पर बैठा हुआ था, चारपाई पर बैठा हुआ था. The kids were at play, going out and coming in. The kids were playing. In children's of the writer, they were playing. They were sometimes going out, sometimes going in. वो बाहर जा रहे थे, अंदर आ रहे थे. They were making a lot of noise. The writer says that these children were making, they were crying, they were making lot of noise. वो शोर मचा रहे थे. But I was more or less oblivious to it. But the writer says that he was not aware about that. Oblivious means not aware. वो उनके मुतलिक उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था. The chili plants were dancing in the breeze, and these chili plants, they were moving here and there. They were dancing in this breeze, in this gentle wind, and water drops were falling from them. And these water drops which had fallen on these chili plants, they were coming down, they were sliding down from these plants. Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. And the writer, sometimes when he looks towards the sky, there were some small patches, some small patches means small pieces, some small pieces of clouds were moving here and there. To and fro means here and there. आगे पीछे वो कर रहे थे. Sometimes they covered the sun and it becomes cloudy, and sometimes they cover these clouds cover the sun. कभी कभी वो सूरज को अपने अंदर छुपा रहे थे. And sometimes the sun came out, and sometimes the sun came out. So it was a very charming scene. Papa ji, see in the swing of Gudda Guddi. Now the children are saying something to their father. Oh Papa ji, see the wheel of Gudda Guddi. Munni was saying, clinging to me. When Munni came to his father, he was holding him tightly. Clinging means holding him tightly, and he says that, "Oh father, see the round-shaped Gudda Guddi on the sky." अब दानक की वो उसको रेनबो की तरफ इशारा कर रही थी. Where is it, daughter? I asked. The writer says that I asked the Munni, I asked the child, where is it? कहाँ पर है वो? There up in the sky. Multicolored, replied Munni. Now the Munni replied, it's a multicolored. You look toward the sky and see it's a multicolored. ये बहुत कलरों वाला है. अब इसकी तरफ देखिए. Is that the swing of Gudda Guddi? I asked the child, is it the wheel of the Gudda Guddi? She shot back with a touch of annoyance. Now she was a little bit angry. वो थोड़ा उसको गुस्सा आ गया. उसने मेरी तरफ देखा
द हु देन whose is it if not theirs। अगर ये इसका उसका नहीं है तो किसका है ये फिर? थोड़ा बहुत वो नाराज हो गई, annoyance हो गई। annoyance मीन्स slight anger। who told you, मैंने उसको पूछा, राइटर सेज दैट, मैंने उसको पूछा who to, आपको किसने बोला? ग्रैंडमा टोल्ड अस, उस बच्ची ने बोला कि ग्रैंडमा ने मुझे बोला, यानी मेरी दादी ने मुझे बोला है। I see then it must be so, I said। Now I told the child, yes, yes, it must be so, I said, looking at the rainbow in the sky। Now the writer says that he was looking towards the sky, he was looking towards the rainbow, and he told the child, yes, I see, Papa ji, I too want a swing। Now the child told his father, Papa ji, I too want swing, मैं भी swing मैं भी इसी तरह बनना चाहती हूँ। You can have this one, I tried to put her off। You can have this one, I told the child, you can have this one। आप भी इसको ले सकते, आप भी इस तरह बन सकते। You can have this one, I tried to put her off, I tried to differ, मैंने उसको डिफर करने की कोशिश की। put off means differ। दिस डजेंट हेल्प, मगर मुझे इसमें मदद नहीं मिली। वाई शुड आई टेक समथिंग दैट इज़ नॉट माइन। द चाइल्ड सेज दैट वाई शुड आई टेक समथिंग दैट इज नॉट, वाई शुड ही टेक समथिंग दैट इज़ नॉट हिज, जो मेरा नहीं है वो मैं क्यों लेना चाहूँगी। आई बिगेन वॉन्डरिंग हाउ वाइज द लिटिल वन वॉज, आई वॉज वॉन्डर्ड, समटाइम्स आई वॉज अमेज्ड। दिस द चाइल्ड इज वाइज, इट इज़ सो वाइज, ये बहुत चालाक है कि ये छोटी बच्ची कितनी चालाक है। मोमी केप्ट टॉकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स देयर आफ्टर, बट आई कुड नॉट पे अटेंशन टू ऑल दैट। मोनी केप्ट टॉकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स, नाउ मोनी इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में अब बातें कर रही थी उसके बाद। बट आई कुड नॉट पे अटेंशन टू ऑल दैट, मगर मैंने उसकी तरफ तवज्जो अपनी नहीं दे दी। आई वॉज लॉस्ट इन माई ओन musings। Now the writer says that he was deeply thinking about these water drops। Musings means thoughts। He was deeply thinking about these how the water drops are falling from these chili plants। So this is all for today। कल हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे इसमें क्या होता है। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके मानी भी आप लिखिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम आगे इसको देखेंगे। थैंक यू।